'cause everything is never as it seems. We have finally left from our home, and so as I was saying yesterday that I might be able to stay, I might not be able to stay, so मुझे actually जाना पड़ेगा. So here I am. It's right now it's 5:49 in the morning, so it's about 10 minutes to 6 a.m. and we've left officially. फ्यूल कल रात में करवा ही लिया था, क्योंकि कल रात में ही डिसाइड हो गया था that I'll have to travel to Delhi tomorrow, तो इसलिए मैंने रिफ्यूल करवा के रख लिया था. So अभी I am all set and we just have to go ahead and hit the highway. So yep, so let's start the journey. The total distance I have to cover today from here to my home in Indrapuram, Ghaziabad is about 733 kilometers, and Google is showing approximately 13 hours 43 minutes to cover that. Now let's see how soon how fast we can cover that. So when we were coming from New Delhi to Bhopal, we covered this distance in about 11.5 hours. अभी टेम्परेचर कुछ नहीं करके आराम से 15-16 डिग्री के आसपास होगा. It's gotten very chilly. I'm wearing my winter nylon, I'm wearing my winter gloves, and even then I am feeling those chilly airs. भाई ठंड है आज बढ़िया वाली. मतलब चलता है फिर. जर्नी स्टार्ट हो चुकी है एंड वी हैव अ लॉन्ग वे अहेड ऑफ अस. सो करेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत लंबा रास्ता है, तो विल हैव सो मच टू टॉक. रास्ते में जो भी इंटरेस्टिंग अच्छा कुछ भी दिखेगा, आई विल टेल यू गाइज अबाउट इट, आई विल टॉक टू यू गाइज अबाउट इट. और बाकी आप जानते हो, यार आपको अगर मुझसे बात करें, प्लीज़ जस्ट द कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स. Go ahead and comment down in the comment section below. जो भी आपके मन में, if you have any questions, any suggestions, or anything for that matter, any feedback, please do leave your comments in the comment section below. चलो फिर. अभी तो यार आज तक कुछ है नहीं यहाँ पे दिखाने के लिए, सेम ओल्ड रोड्स. तो अभी let me just hit the highway and then I'll talk to you guys on the highway. Okay, so we've taken the right on the Guna Bhopal highway, and it's actually getting very cold right now. Like I am literally freezing in my jacket. I don't know ये ठंड एकदम से कैसे बढ़ गई. कल रात तक इतनी नहीं थी कसम से. सुबह होते होते हवाओं का रुख बदल चुका है एकदम. वैसे मतलब I actually woke up at 4 a.m. today, but then at 4 a.m. it was too chilly and it was too dark, so I thought yaar any which way it's gonna take me about 11.5-12 hours to reach Delhi, so it's better that I leave by 5:30 5:45 so that थोड़ा सा उजाला हो जाएगा. I don't really prefer riding in the night time, so थोड़ा उजाला हो जाएगा. And in the day I'll go ahead and cover the whole journey. I just want to go ahead and cover whole the city area. हालांकि सिटी एरिया ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ जो भी ये थोड़ा बहुत भी जो भी एरिया है, क्योंकि आते टाइम मुझे इस रोड पे भी काफ़ी तरह ट्रैफिक मिला था. सो या आई जस्ट वांटेड कि सुबह मैं एटलीस्ट ये सब एरियाज क्रॉस कर लूँ जो पर्टिकुलरली मेन स्टेट हाईवेज या नेशनल हाईवेज नहीं है, जो सिटी के बीच से या किसी विलेज के बीच से होकर निकल रहे हैं, ताकि वो क्रॉस कर लो एंड देन आई कैन कंटिन्यू माई जर्नी अहेड. जब थोड़ी सुबह हो जाएगी उसके बाद तो हाईवे पे देयर शुड बी अ प्रॉब्लम.
I just stopped on this road to experience this beautiful sunrise. And just look at the sky. I don't know what these lines are. If you can see it from the camera, if the camera is able to do the justice to the view. This is like I don't know. Such a beautiful sunrise. Such a beautiful sunrise. What a breathtaking view, yaar. I mean, amazing. I actually just stopped for a while to, see and, actually realize कि okay, ये सच में इतना सुंदर है. So now we're just gonna go ahead and continue our journey. एक तो हमारा गूगल मैप अच्छा खासा हाईवे चल रहा था. अब पता नहीं हाईवे से हटा के कहाँ मुझे ले आया गलियों के बीच में. भाई इतना शॉर्टकट नहीं चाहिए होता अपन को यार. अपन मतलब वो बात एक ही, अपन यहाँ पे स्पीड पे मैचअप नहीं कर पाते. तो मैं 2-4-5 किलोमीटर बचा के भी क्या करेंगे. अपन 2-4-5 किलोमीटर लंबा चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ये रास्ता मैंने आते हुए नहीं लिया था. ये आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि मैं इस रास्ते से तो नहीं आया था. तो मतलब ये मुझे दिल्ली से भोपाल लाया किसी और रास्ते से था, ले जा किसी और रास्ते से रहा है. एनीवे अब क्या कर सकते हैं, इन्हीं के भरोसे हैं हम जो है. तो जैसा गूगल देवता कहेंगे वैसा हम करते रहेंगे. सो अभी we've covered about 115 kilometers so far from my home. And we still have about 617 more kilometers to go. So let's just keep moving. I am not feeling hungry or thirsty right now, so I don't need. I am feeling cold, but ठीक है, the sun has come up, so I'm a bit relaxed, but my hands are still numb. So yeah, that's one point. तो अभी तो नहीं, मतलब I'll probably ride for another 150 kilometers more, and then we'll think if I need a short break or if I need to sit down to eat something or drink something, we'll take a call then. And here we are, the first toll booth of our journey today. It was so cold. Actually, it is even cold right now. मेरा ये वाला हाथ तो actually जमा हुआ पूरा. And I also have caught a bit of cold. And we've covered about 170 kilometers so far. And we still have about 560 kilometers more to go. Long way ahead, my man. So far I've covered about 310 kilometers from Bhopal. I am somewhere near Gwalior. I am 100 kilometers before Gwalior basically, and यहाँ से my home is about 425 kilometers more to go. So abhi I've just taken my first break. I have been riding continuously for the past 4 hours. Not 4 hours exactly, about 3 hours 40 minutes. And I've covered about 310 kilometers in 3 hours 40 minutes. So we're going at a good pace since the highways are very, very nice here. So we're going at a good pace. Let me quickly just go and grab some water to drink and just rest for like 5 minutes, and then I'll talk to you guys on the bike. Okay, so we're done with a short break here, and the distance we have more to cover is about 423 kilometers,
and as per Google the time it shows I would take to cover that is 7 hours 58 minutes. Now let's see how much we can cut it short, but yeah, I'm assuming I should be home around 5 p.m. in the evening. That's what I'm expecting. Baki, let's see. We will enter Gwalior, and then from there Gwalior and then Agra. You know, I'll have to cross the whole city and then I'll get on the Yamuna Expressway. So I'm not sure how much time it is gonna take me to cross the city, especially at this time of the day. It's around 10 p.m. 10 a.m. right now. Sorry. So yeah, so let's just see on the way कितना टाइम यहाँ से और लगता है हमें अभी. आई एम होपिंग कि मुझे ग्वालियर और आगरा में इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा, सो यू नो आई कैन ईजिली गो एंड क्रॉस द सिटीज एज वेल. Obviously I won't be getting 6-lane highways like this, but or probably 4-lane highways either, but ठीक है. मतलब even if अगर 2-lane highway पे भी ट्रैफिक कम होगा and I'll be able to maintain my speed, I think I should be good to go. So yeah guys, that's what the update is so far, and बाकी इसके अलावा I'll keep you posted अगर कुछ भी और होता है तो. Otherwise it's just the same roads that we came from, and I just stopped here to refuel. और पता नहीं इन्होंने इससे ज़्यादा पेट्रोल बाहर से, they said the machine was reset or something, जिस वजह से करनी चाहिए है. यहाँ बाहर बैरल में पेट्रोल भर के रखा हुआ है और ये उसी से पेट्रोल भर रहे थे. अब आई वॉज लो ऑन फ्यूल, सो आई हैड नो अदर चॉइस. मैंने कहा यार अब इसके आगे मिलने को तो पंप मिल जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है सच, बट आई थॉट वाई टू रिस्क इट. तो मैंने बस देखा पेट्रोल तो ठीक था, उसने 7 मिनट आया नाप के, तो इट वॉज ओके, एंड चार्ज भी ज़्यादा नहीं किया कुछ, तो ठीक है दवाई लेते हैं फिर. भाई साहब ये देखिए आप, शहर के बीचों बीच इतना बड़ा पहाड़. शिट मैन, दिस इज ह्यूज. क्या लग रहा है ये रोड से देखने में. अमेजिंग यार. जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं इनको क्या व्यू मिलता होगा इसका. और बारिश के टाइम में तो ये और भी लगता होगा जन्नत, एकदम ठंडा ठंडा. गर्मी में हालांकि बहुत ज़्यादा इसको देख के लगता होगा अजीब सा, क्योंकि वो स्टोन से हीट होता है ना और ज़्यादा. बट स्टिल यार अमेजिंग. तो इसको अगर ढंग से मेंटेन करे, कुछ बढ़िया सा बना दो तो कितना सही हो जाएगा. ठीक है, अभी नेचुरली भी ठीक ही है. और इस सीधे हम हाईवे छोड़ के किसी शहर की गलियों में, आई डोंट नो अभी मैं कहाँ हूँ. मैं ग्वालियर के अंदर तो नहीं हूँ, शायद हम ग्वालियर क्रॉस कर चुके हैं, एंड वी हेडिंग टुवर्ड्स मुरैना. तो उसके बीच का कोई सी जगह है ये. कुछ तो भी पहाड़िया पुलिया लिखा है, आई डोंट नो. ओके, दिस इज लाइक ग्वालियर ही है, ये ग्वालियर का ही पार्ट है. And now I'm heading towards Morena. I am pretty sure that you all must have heard about the Chambal ki ghatiya. Well, here we present it for you. So these are basically Chambal की घाटियाँ जो थी वो यही थी, जहाँ पे एक टाइम पे डाकुओं का बहुत तगड़ा सरगना हुआ करता था, या उनका राज हुआ करता था. अब हालांकि ऐसा नहीं है, बढ़िया. बोलो तो चंबल एरिया जहाँ पे वो डाकू रहा करता था. खैर बहुत पीछे तो जो तक होगा, ये काफ़ी बड़ा होगा. अंदर तो गया फुटबॉल रोड. दिस इज द चंबल एरिया, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पे वो डाकू
और चंबल का एक बहुत फेमस डाकू था पान सिंह तोमर के अलावा. दिस इज द चंबल नदी right there, if you guys can see. I'll try and show you. I've heard कि इस घड़ी में बहुत सारे वो होते हैं घड़ियाल alligators basically. Yeah, that's what we call them, alligators. वो तो बहुत सारे हैं. So guys, we reached the Yamuna Expressway and we've covered about 600 kilometers so far since morning, and we still have about 132 kilometers more to go. So as said in the morning, like we had a total of 733 kilometers to cover. We've already covered about 600 kilometers and we have 133 kilometers more to go. So although Google is showing about 2 hours 30 minutes to cover that, but I am not sure if it's going to take that much time. I think we should be able to do that in like 1.5, 2 hours at max. Guys, we've left the Yamuna Expressway, we've crossed the Noida Greater Noida Expressway. I didn't shoot there क्योंकि वो ऑलरेडी आप लोगों ने देखा हुआ था पिछले वीडियो में, so पिछले वीडियो में, so I didn't want to show it to you guys again. So I have just entered my locality, so I just reached Indravaram, and my home from here is about 1.8 kilometers. That's it. So yeah, so finally after a long day we've completed our journey, and we've completed our trip to Bhopal. So and this was a great ride too. So we covered about 733 kilometers in about 10 hours and 10 minutes, which is not bad. It's not bad. It's a great timing thing. So guys, I'm just gonna go ahead, get home, unpack my stuff, unmount the bags from the bike, take them back to my home, and I'll quickly freshen up, or I'll probably take a bath because I'm not very tired, I would say, but yeah, I'm kind of feeling a little lethargic. So I'll probably just go ahead and take a shower and I'll be okay, and then I'll talk to you guys after that. So till then, take care. I'll see you soon. Okay, guys, I'm finally home, and it's about 8 p.m. in the night right now, 8 p.m. in the evening, you can say. And so मुझे मतलब घर आए हुए अभी ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे हो चुके हैं. So I just came up, अपने सामान निकाला, बाइक सैडल बैग निकाला एंड टैंक बैग निकाला, उनको लेके ऊपर आया, देन चेंज किया, देन आई वेंट अहेड टुक अ बाथ. बट उसके बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, क्योंकि रास्ते में हमने ऐसा कुछ खाया नहीं, ना कहीं किसी ढाबे पर रुका चाय पीने के लिए, ना किसी और चीज़ के लिए. आई वॉज जस्ट कैरिंग माई वाटर बॉटल्स. तो उसके लिए 2 छोटे ब्रेक लिए और बस सिर्फ 5-10 मिनट रुका, पानी पिया, एंड देन वापस राइड करने निकल गया. So that's all the break we took today during the ride. And so roughly we covered about 740 kilometers today in total in about 10 or 15 minutes, which is a great time. It is actually the best time for me. I mean, this is the best I've ridden so far in my entire life, क्योंकि 740 kilometers in 10 or 15 minutes, like that gives me an average speed of about 75 kilometers per hour, roughly 75-80 kilometers per hour, which is like not bad. If you can manage to ride at a speed of 75-80 kilometers average speed through your entire ride,
I mean, I think that is great. That is great. So yeah, that's an achievement. Plus, obviously the roads were like amazing. There were a few patches that were bad, but that's okay. That's like the patches, bad patches are always there, no matter where you go. So yeah, since most of the roads were good, I was able to catch up, on those roads. और वो ख़राब रास्तों में जो भी टाइम थोड़ा बहुत वेस्ट हुआ या ट्रैफिक में जो थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हुआ while crossing ग्वालियर एंड आगरा, वो आई कवर्ड दैट ऑन दी एक्सप्रेस वे while coming back. So yeah, so I guess guys, अभी के लिए this is pretty much it. That's all the update that I had. So अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, if you enjoyed this video, अगर यहाँ तक देख लिया है तो please go ahead and like the video, and if you have any feedback, any comment, anything you would like to share with me or say to me, the comment section is all yours. जाओ उसमें लिखो. I love to read your comments, love to go through them, and I make sure that I reply to every comment that comes from a video. हालांकि इतने आते नहीं हैं अभी, so it's like 10, 12, 15, 20 comments के तो reply कर ही सकता हूँ obviously. But yeah, even if this grows, अगर 100, 200, 300 comment भी होंगे, don't worry, I even go and reply then to each and every video, to each and every comment personally. So yeah guys, so that's pretty much what the update is so far, and yeah, so thank you so much for watching, and I'll see you guys very soon in the next video. Till then, take care.